Hello everyone, I am Vandana and I welcome you all to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. So friends, how are you all? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अभी तो इंडिया में कोविड की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है. इट्स टू मच COVID-19 in India. So I think so stay at home and try to do your official work also from home so that you are safe. सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरा है अबाउट द असिस्टेंट फार्मासिस्ट. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ओनली अबाउट असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब इन दुबई और इन द एंटायर UAE and what all jobs you can do here, what are the requirements, what all categories of jobs are there that you can apply apart from only just the pharmacist assistant job. Okay, what license are required, what is the salary and everything. तो इस वीडियो में आज हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट डी फार्मासिस्ट के बारे में. सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं वही चीज़ जो मैंने वीडियो में बताई हुई होती है. तो इसलिए प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड सो यू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ओनली अबाउट डी फार्मासिस्ट. सो ऑल दोज हु बिलोंग टू who have done D pharmacy, who are assistant pharmacist, do watch this video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर कीजिए जो लोग UAE आना चाहते हैं, who wish to come to UAE for working as a pharmacist here. So now let's start the video. Friends, already I have discussed about the pharmacist in my previous videos. So आज के इस वीडियो में भी हम उन्हीं कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, एज वेल एज कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि मैं वो चीज़ें मैंने वहाँ से पिक करी हैं जो आपके मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हैं. सो बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, there are some things that I have picked up from there as well as the other details that I'm going to share with you. So now let's start the video. So friends, for working here in UAE, चाहे UAE की किसी भी एमिरेट में आपको काम करना हो, either दुबई, अबू धाबी, रसल खेमा, अजमान, शारजा, anywhere, wherever you want to work, first thing is you need to have a license because assistant pharmacist also need to have a license. सिर्फ ट्रेनीज को जरूरत नहीं होती है, अदरवाइज ऑल नीड लाइसेंस. सो यू नीड टू हैव अ लाइसेंस इफ यू वांट टू वर्क हियर इन UAE एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट. आपके पास व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? वी स्टार्ट विद द क्वालिफिकेशन फर्स्ट. सो यू शुड हैव अ D pharmacy degree or a diploma degree for working as a assistant pharmacist. If you are bachelor's, if you are master's, if you are PharmD or a PhD, you don't need to apply for assistant pharmacist. Then you can directly go for the position of pharmacist in UAE or on the whatever else you want to become, like clinical pharmacist is also there. So if you have done only diploma in pharmacy, you have to apply for assistant pharmacist. So based on different emirates in UAE, there are different exams and you get different license to work in that particular emirate. Suppose आपको दुबई में जॉब करनी है. So if you want to work in दुबई, आपके पास दुबई हेल्थ अथॉरिटी, कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है DHA का फुल फॉर्म क्या है. So it's दुबई हेल्थ अथॉरिटी. Dubai Health Authority is a license that is required for all the medical professionals, not only pharmacists, doctor, nurses and all allied healthcare professionals. Even we also come under the category of allied healthcare, we pharmacist. So for working as a assistant pharmacist, you should have a degree of you should have a diploma in pharmacy. And then depends on which emirate you want to work, you can choose your exam. Suppose आप दुबई में काम करना चाहते हैं, दुबई में असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं, then you apply for DHA assistant pharmacist license. If you want to work in other emirates like like Sharjah, like Ras Al Khaimah, Ajman, Al Quwain,
Then for these Emirates आपके पास MOH license होना चाहिए. You should have MOH license for working in these Emirates. So you apply for Ministry of Health, that is MOH Assistant Pharmacist license. Now if you want to work in Abu Dhabi or in Al Ain, so Abu Dhabi is the capital of UAE. So if you want to work as an assistant pharmacist there, then you should have HAAD or DOH license. Okay, so HAAD, HAAD, Health Authority of Abu Dhabi, that is the full form of this HAAD. So this license is required for working in Abu Dhabi and all the Emirates, the small Emirates that come under Abu Dhabi. So जो भी Abu Dhabi के अंदर बाकी उनके small Emirates आते हैं, उन सभी जगह वर्क करने के लिए आपको हाथ की रिक्वायरमेंट होगी. सो इन UAE टोटल 3 licenses are there, MOH, DHA and HAAD. So this choice you have to make, guys, in which emirate you want to work. Okay, so after clearing your exam, you can apply for this exam from your home country. आप किसी भी country में हो, you can apply from your home country and you can give this exam. These are prometric based exam. These are prometric exam and computer based multiple choice questions in exams में आपको मिलते हैं. So I have already a video on how to apply for DHA for DHA, Dubai Health Authority. It's not only for pharmacists, it's for all categories because the procedure is the same. You only have to change your category. जहाँ पे आपसे category section आएगा वहाँ पे आप assistant pharmacist को choose करेंगे and rest the entire procedure is the same. You will have to upload your your diploma certificate there और अपना इंडिया का, पाकिस्तान का, इजिप्ट का, मोरक्को का, जहाँ के भी आप हैं, नेपाल का, विच एवर कंट्री यू आर इन, उस फिलीपींस का, उस कंट्री का आपको अपना यू हैव टू अपलोड योर रजिस्टर्ड असिस्टेंट फार्मासिस्ट registration of that country. You have to upload your diploma certificate that you are diploma pharmacist, okay, that certificate, and you have to upload your white background photograph, your passport photograph, your passport copy, and maybe one or two more documents. Whatever will come as you apply, the documents will come and you have to upload them. There will be certain fees that will be asked. वो fees you have to pay. Then at last they will ask you to choose your exam date and your exam center. So you can choose any exam center nearby your place. Suppose you are living in India, तो वहाँ पे दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में और भी काफ़ी जगह पे हैं. So if you are living nearby Delhi, so it is easy for you to come to Delhi and give exam from there, or you have some relatives living there, तो आप Delhi center fill कर सकते हैं exam के लिए. Or whichever nearby center it is showing for you, because I have given my exam in Dubai itself, so I don't know कि इंडिया में कहाँ पे centers हैं. Whatever it will be, it will show. Okay, so you can choose your nearby center. आप अपनी एग्जाम की डेट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू नॉट टू बी इन अ हरी टू बुक द अर्ली एग्जाम डेट, क्योंकि फिर अगर आप फेल हो जाते हैं, आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, देन यू हैव टू अगेन री अप्लाई फॉर दैट. You will not have to pay the fees for data flow and PSP, but yes, you have to pay the exam fees. So that fees you have to pay again. So it's better to be, to take your time for your preparation, and after that you apply for your exam. So this is how you are going to apply for your assistant pharmacist exam for DHA. I have also uploaded a video for HAAD. तो आप HAAD के लिए भी, if you want to go for HAAD license, you can apply, and very soon I'm going to upload a video for MOH pharmacist, so you can even see how you have to apply for your MOH license. Okay, on the basis of my upcoming, that's in just couple of weeks I will upload that video. So I have all the 3 videos I will be having all the 3 videos in my channel: how to apply for DHA, how to apply for HAAD, and how to apply for MOH. This choice you have to make which emirate you want to work, and accordingly you can apply for that exam. You can do everything online. Everything is online. Just you have to go to the website and do that. Okay, so that you can see in my other videos. Now it comes to what are the job positions that a diploma pharmacist can do. So first thing, as we are discussing, that you can
work as an assistant pharmacist. Okay, as an assistant pharmacist you are restricted from some roles, like आप directly किसी भी कस्टमर को, किसी भी पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे सकते. दैट मीन्स यू कैन नॉट गिव एनी पेशेंट, एनी कस्टमर मेडिसिन डायरेक्टली. Medicine, only the pharmacist is allowed to give the medicines. Yes, you can you can recommend them what medicine they can take, and you can talk about their health issues, you can discuss with them, you can suggest them, but you cannot give the medicine from your hand. If you do that, you have a fine here in UAE, because assistant pharmacists and trainees are not allowed to do that. Only pharmacist will hand over the medicine. Apart from this, all the duties are the same. Okay, you can take the approval for the insurance, you can do all other works in the pharmacy, only just you cannot give the medicine to the customer directly. That's only the restriction, otherwise other things are same. Then comes your salary. So salary, when we talk about assistant pharmacist, I have already discussed in my many videos, but let's me talk once more today also. So salary is like it starts from 2,500 or 3,000, and then it moves on. You can even get 3,500. It depends on, sometimes there are many companies who offer 3,500 to 4,000 also to assistant pharmacist as a fresher. As a fresher means you have the experience of your home country, but you do not have the experience in UAE, so you are considered as fresher. ठीक है, आपके पास UAE में एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फ्रेशर ही कंसिडर किया जाता है जब आप अपनी पहली जॉब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो फॉर दैट जॉब यू विल बी गिवन सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, डिपेंड्स ऑन, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन. ओके, आपके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप कैसे इंटरव्यू अपना देते हैं, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस वो कंपनी की भी अपने कुछ क्राइटेरिया होंगे कि वी कैन ऑफर फ्रॉम दिस टिल दिस लिमिट टू दिस असिस्टेंट फार्मासिस्ट. तो उस पर भी वो डिपेंड करता है. बिकॉज अगर कोई छोटी कंपनी है या कोई इंडिविजुअल छोटी फार्मेसी है, दे विल नॉट गिव यू मोर देन 3,000. ओके, बट कोई अगर अच्छा ग्रुप है और आप दे आर इम्प्रेस्ड बाय यू, दे माइट इवन ऑफर यू 3,500 to 4,000. Okay, so it depends on. And then after that, as you have experience in UAE, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है slowly. And then we can also discuss about the other job positions जो हम एक्चुअली कर रहे थे, but we just shifted to salary and other things. So what else you can do here as assistant or a diploma pharmacist? तो इसके अलावा आप यहाँ पे चाहे तो कंपनी की जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. कंपनी की जॉब्स में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू डोंट नीड टू हैव अ लाइसेंस टू वर्क इन अ कंपनी इन UAE. तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन आप दिस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ यू हैव अ एक्सपीरियंस इन इंडिया और इन योर कंट्री एज अ मेडिकल रैप, अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसमें लिया है, और बिकॉज मेडिकल रैप ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस, MOHDH or hard license, so you don't have to clear the license for that, and you can work as a medical rep in UAE in any emirate. Okay, and also you are free to work in any emirate without a license, whichever emirate you want to work, या फिर जहाँ पे आपकी जॉब आपको मिल जाती है, whichever emirate आपको जॉब मिलती है, that also depends. क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हैं या आप जब अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री से, तो आप तो हर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. यू जस्ट डोंट ओनली लुक फॉर दुबई जॉब, यू लुक फॉर द जॉब इन UAE एंड एंटायर UAE. सो आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज इट्स अ स्टार्ट, यू हैव टू मेक अ स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. सो आपको जहाँ से स्टार्ट मिल जाती है, आप उधर से स्टार्ट करना सही समझते हैं. एंड देन यू कैन ऑल्सो वर्क इन इंश्योरेंस कंपनीज. इंश्योरेंस कंपनीज में भी फार्मासिस्ट को लिया जाता है. वहाँ पे आपके पास both opportunities होती हैं. Like sometimes they require the person who has a license, and sometimes there are roles which are not for any licensed pharmacist. They just only say that you in qualifications that you should have a degree in pharmacy, that's it, or in pharmaceutical sciences, like or BSc pharmacy or M.Pharm or B.Pharm or diploma, like that, or just they write you should have bachelor's in pharmacy. So usually diploma in pharmacy नहीं लिखा जाता है, but you can apply. Okay, because after all you have also studied
the pharmacy, about the pharmaceutical sciences in your college. So you have the knowledge of that, and you can also apply. So these are some other job categories apart from assistant pharmacist that you can do the jobs in, and you can apply. क्या तो यू कैन आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में, आप इंश्योरेंस में अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज आप मेडिकल रैप की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. देर आर मेनी जॉब्स, देर आर मेनी अदर जॉब्स ऑल्सो इन एडमिनिस्ट्रेशन, in the pharmaceutical companies, in the groups, and as well as not only I'm talking about the manufacturing companies, I'm also talking about because here we have a lot of supply chains, lot of supply companies, sorry, not chains, a lot of supply companies in UAE which are not doing the manufacturing, but they only do the supplier work here, only supply the medicines, equipments, and all the medical related things to the pharmacies, medical centers, and clinics. So you can also apply for the jobs in those in these companies. Okay, इन सारी companies के बारे में I have already discussed in my previous video. Please आप मेरे channel पे जाएं, go to my channel Pharma and Jobs in Dubai, and go to the videos. All the videos will come, or you can also go to the playlist and see there. There are many videos, and I have also not discussed, I have already told about many pharmacy chains in almost all the major pharmacy, important pharmacy chains, pharmacy companies, pharmacy groups in UAE, entire UAE. So that will give you, that will be helpful for you. There are 2 videos on that. Also I have told about the pharmaceutical companies in UAE, so that video will also help you to know what are the pharmaceutical companies here in UAE. So this is all in this video for today, friends. So I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी and आपको information मिली होगी about the assistant pharmacist in UAE. So thanks for watching this video, and stay tuned for my next video.